Hello students, today we are going to study about the population growth. As you know that already we in this chapter we have studied about the composition of the population and the density of population. Now the third topic of the chapter is the growth of the population. You know what is the growth? As you know that in this picture you are able to see that the increasing number of the people from the particular between the 2 points of the two time, just like means there are the from one year to another year from the particular one period in the particular period, that is called the uh, growth rate, and it is the change in the number of the people. Change in the number of the people means, suppose at the 5 years ago there were living the 1 lakh people, and after 10 years it has become the 1,20,000, means there is the growth of the 20,000 people. So this is the it is the change in the number of the people living in the particular living in a particular area between 2 points of the time. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम है, उनके बीच में जो नंबर ऑफ पीपल के अंदर चेंज होता है, दैट इज द population growth of the population. It may be in the minus also and in the plus also. जो population growth है वैसा नहीं कि हमेशा आगे ही बढ़ती है, कभी ये कम भी हो, पॉपुलेशन किसी जगह की कम भी हो सकती है, किसी जगह की बढ़ भी सकती है, तो वह है दैट इज द growth of the population. Now this population growth is expressed in the percentage. It's just like 1%, 2%, -1%. So जो population growth है उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं population in percentage. The population growth has the two component, और जो populations का कम या ज्यादा होने का जो there are main two components. One is natural and another is the induced. मतलब जो population ज्यादा होने का या कम होने का जो कारण है वो दो कारण हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कि नेचुरल तरीके से, जहाँ पे कोई, और दूसरा हो सकता है induced. Now in the natural growth is analyzed by assessing the crude birth and death rates. नेचुरल जो ग्रोथ होती है वह क्रूड मीन्स ओरिजिनल या बेसिक. क्रूड बर्थ रेट एंड द डेथ रेट मीन्स 10 इयर्स के अंदर, जैसे सपोज कीजिए हम 10 इयर्स का पीरियड्स लेते हैं या 10 इयर्स के की पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम असेस करते हैं, तो 10 इयर्स के अंदर नेचुरली कितनी डेथ्स हुई और कितने बर्थ हुई. जो बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर जो डिफरेंस आएगा दैट इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर 10 इयर्स अगर उसका हम एनुअल रेट देखें तो बर्थ रेट मीन्स अगर बर्थ होती है 100 पीपल की, सॉरी 100 चाइल्ड्स बर्थ लेते हैं और 80 हर साल उसका डेथ हो जाता है, तो क्या हो रहा है, एवरी ईयर देयर इज द चेंज ऑफ द 20 पीपल. सो दैट इज द नेचुरल. उसमें कोई दैट कोई बाहरी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है. The another components of the population is the induced components, and it is explained by the volume of inward and outward movement of people in any given area. तो यह है इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स. इसमें क्या होता है कि जैसे एक जगह पे कितने लोग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 इयर्स या 100 इयर्स को अगर हम जो भी असेस करें, तो कितने लोग वहां से आए और कितने लोग वहां से गए, तो उसमें चेंज मीन्स शिफ्ट हो जाते हैं. जैसे कि फैमिलीज एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट हो जाती है या एक लॉन्ग पीरियड के लिए शिफ्ट हो जाती है, तो वहां पे क्या नंबर ऑफ पीपल के अंदर चेंजेज आएगा,
ज़्यादा, अगर आउटवर्ड मूवमेंट है तो कम होएगा और इनवर्ड मूवमेंट है तो ज़्यादा होएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं हम रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। अभी एक क्या ट्रेंड है कि लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं या उनका माइग्रेशन हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो रूरल पॉपुलेशन है दैट इज डिक्रीजिंग एंड द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो अगर हम एक विलेज की और एक सिटी के जो इंड्यूस्ड ग्रोथ है, जो इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स है, तो सिटीज का पॉपुलेशन माइनस में, सॉरी सिटीज का पॉपुलेशन प्लस में होगा बिकॉज देयर इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, एंड इन द urban rural areas the number of the people will decrease, and that because there is the outward movement of the people. So these are the two components of the population growth, that one is the natural and another is the induced. But in this chapter, means in class 12th, in this chapter we will be discussing about only the natural factor or the natural growth of India's population. And the decadal and annual growth rates of India, growth rates of population in India are both very high and steadily increasing over the time. अगर हम annual और डिकेडल, मतलब एनुअल मीन्स हर साल की और डिकेडल मीन्स एवरी 10 years की, अगर ग्रोथ रेट देखें तो दैट इज वेरी high, मतलब वो that is in the plus, and that's why the population of India is continuously increasing. And if we talk about the growth annual growth rate of India's population according to the 2011 census, it was 1.64%. So the population, the growth of the population is increasing, and the number of the population is also increasing. Now there are some other factors. The growth rate of population in India over last 1 century has been caused by the annual birth rate and death rate and the rate of migration, thereby shows the different ट्रेंड्स। जो इंडिया की जो पिछले 100 सालों की बात करें, जो 1 सेंचुरी की बात करें, तो जो पॉपुलेशन के ग्रोथ का हुआ है वो क्या हुआ है, एक तो एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट की वजह से बढ़ी है, दूसरा एक माइग्रेशन, जैसे कोई दूसरे देश से अपने देश में आ गया या अपने देश के से दूसरे देश में माइग्रेट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन के नंबर ऑफ पीपल ऑफ द इंडिया इज चेंजिंग। There are 4 distinct phases of the growth identified in this period. अगर हम last 100 years की बात करें, from 100 means 1901 to 1901 to 2001. This is the 1 century, and in this century there are the 4 phases of the growth of population. इस पीरियड के अंदर 4 phases हैं population growth की। The first phase is from 1901 to 1921. जो first phase है that is from 1901 to 1921, and it is referred as the stagnant or the stationary population. Stagnant or the stationary means there was no big change, means in this period of time the population growth was not high, and of India, since in this, because in this period the rate was very low, the growth rate of the population was very low. Even in some years from 1911 to 1921 the growth was in negative. Both the birth and death rates were high, keeping the rate of the increase low, because the death rate and because of the death rate and the birth rate means during this period the deaths were higher and the births were lower. The number of deaths was high and the number of means the number of death was high and the number of birth was less. That's why the growth rate was very low. And the reason behind this, there were some reason which
causes the low birth rate was the poor health system, because during this time there was the poor health system, uh, illiteracy of people at the large and inefficient distribution system of food, and the illiteracy of people at large, and because the people was illiterate and there was the shortage of the distribution of the food. So because of the food also, because the people was not getting the proper food, that's why the death rate was also high. Other basic necessities were largely responsible for the high birth and the death rates, and these are the some factors which affect the death rate and the birth rate. If the health system or the health and the medical services are not good, then of course the deaths will be higher. Even the infant deaths or the child deaths are also very high because of the lack of the medical facilities. If we see in this picture, you can see the example of this here. Here you are able to see that in 1901 to this is in 1901 to 1911, the growth rate was 5. If you see here, the growth rate was 5.75 plus, but from 1911 to 1921 it was in the minus 301, and there were many factors behind this means rate of growth in the minus. Now there was another phase, that was the second phase, and this phase was from 1921 to 1951 and are referred to as the period of steady population growth. And in this duration from 1921 to 1951 से जो ये period है, it was the period of the steady means continuous population growth. In this period the population was increasing in the continuously. An overall improvement in the health and sanitization throughout the country brought down the mortality rate, because in this time in this duration there was the improvement of the health and sanitization throughout the country, and because of because of the health and sanitization the mortality rate decreased, though the death rate और जो लोगों के मरने का जो रेट था वो कम हो गया क्योंकि हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ. At the same time, better transport and communication system improved the distribution system, and जो दूसरा रीजन था पॉपुलेशन का कंटिन्यूसली बढ़ने का वो था कि इस टाइम तक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया था. ट्रांसपोर्ट में डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव होने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड था, जो फूड लोगों तक पहुंचाने का जो सिस्टम था वो इम्प्रूव हुआ. इसकी वजह से जो भूखमरी की वजह से या जो स्टारवेशन की वजह से लोग मरते थे उसका रेट कम हो गया. द क्रूड बर्थ rate remained high in this period, leading to higher growth rate than the previous phase. And the crude means original basic birth rate remained high. जो birth rate था इसमें ज़्यादा था, इसी वजह से ये हमेशा कंटिन्यूसली हाई रहा, जिसकी वजह से जो पिछले वाला फेज था 1901 से 1921 उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो ज़्यादा रहा. This is impressive at the backdrop of Great Economic Depression, 1921 and 1920s, and the World War II. And this is impressive. मतलब there was some adverse situation during this period, because in the 1920s there was the Great Economic Depression, especially in the Western countries, and there was the World War II.
even after that also in World War II instead of the World War II and the Great Economic Depression, there was the increase in the population growth. And then there was the third phase, and the third phase was the was from 1951 to 1981. And during the decade, and this period is referred to as the period of population explosion in India. And from 1951 से 1981 तो जैसे पॉपुलेशन का धमाका हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा जो ये पीरियड है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो that was very high. Even it was in the few years it was 21 to 25% and means decadal growth rate में, मतलब जो 10 साल का जो ग्रोथ रेट था वो 25% तक का नोट किया गया कुछ सालों के अंदर, स्पेशली इन द 1970s, and which was caused by the rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of the population in the country. और जो ये population explosion हुआ, it was because of the rapid fall in the mortality rate, because after independence of the country, the health system, the food system, the food distribution system was increased and it was developed. That's why the mortality rate came down. मतलब mortality rate means death rate, लोगों के मरने के जो नंबर था वो कम हो गया. And because the India there was the high fertility rate of population, इस वजह से मतलब जो mortality rate कम हो गई, फर्टिलिटी रेट और द बर्थ रेट बढ़ गई, इस वजह से पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. द एवरेज एनुअल ग्रोथ वाज एज हाई एज 2.2%, मतलब हर साल 100 लोगों पे 2.2 लोग बढ़ रहे थे. It was the annual growth rate. It is in this period after the independence, the developmental activities were introduced through the centralized planning process. And the reason behind this growth rate during this period was the development activities were introduced through the central planning प्रोसेस. क्योंकि जैसे इंडिया इंडिपेंड हुआ उसके बाद में कहीं जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, उनका सेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू उनका एक्टिवेशन हुआ, उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एंड इकोनॉमिक स्टार्टेड शोइंग up, ensuring the improvement of living conditions of the people at large. And because of the development of the country, development of the infrastructure, the living conditions of the people started improving. जो लोगों की जो living conditions थी, जो रहने की उनकी दशा थी, वह एक लार्ज नेशनल लेवल पे उसमें इंक्रीज हुआ. एंड इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग इन तिब्बतियंस, बांग्लादेशीज, नेपालीज, पाकिस्तान contributed to the high growth rate. And in this duration also there was the international migration was increased. मतलब इस दौरान जो दूसरे देशों से आने वाले लोग थे उनकी ज्यादा तादाद बढ़ गई. उनमें से Tibetans, Bangladeshis, Nepalis, and Pakistani. These were the people which were migrated into India. It also aided in the rate of the growth of the population. And now, अगर दूसरा देखें तो that is the fourth phase, जो population growth का जो fourth phase है, and it was from 1981 to present, और मतलब 1981 से आज तक द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन थ्रू दाउ रिमेंड हाई. इस दौरान भी जो पॉपुलेशन इंडिया का ग्रोथ रेट है वह ज्यादा ही बढ़ा, इसमें भी इंक्रीज होता रहा. हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें डिक्रीज आया. अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ
crude birth rate is held responsible for such a population growth। और जो कमी आई पॉपुलेशन ग्रोथ में वो है कि जो बेसिक बर्थ रेट है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, जो फैमिली प्लानिंग हुई, मतलब कम बर्थ रेट हुई। एंड इसका अगर एग्जांपल देखें तो आज अगर आज से 30 से 40 साल पहले देखें तो फैमिली के अंदर आई मीन्स 4-5 ब्रदर्स सिस्टर्स होते थे, लेकिन आज के टाइम पे पीपल आर लिमिटिंग टू द टू, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिमिटिंग टू द 2 चिल्ड्रन। But before the 50-60 years or the 30-40 years, there was no limit of the children in the family. Even there in the some families there used to be the some parents used to have the 10 to 11 children also. And in today's time, it has decreased to the commonly 2 or maximum 3 in the at the last. That's why जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया। दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन द मीन एज ऑफ मैरिज। और इसका एक कारण ये भी है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो जो एज ऑफ मैरिज है वो बढ़ गई है। पहले 14-15 ईयर्स के अंदर शादियां हो जाती थी, लेकिन आज वही 21 तो ऑफिशियल है लोग, लेकिन जनरली लोग 25 to 30 ईयर्स तक जाके शादी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो एक कपल का जो मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ द बर्थ डिक्रीजेस। जैसे अगर ज़्यादा एज में जाके शादियाँ हो जाती हैं तो जो बच्चे पैदा करने का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो कम हो जाता है। एंड अनदर रीजन बिहाइंड दिस इज द इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री। और इसका एक कारण ये भी है कि जो देश के अंदर फीमेल्स के अंदर एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ी है, इसलिए फीमेल्स भी अब इसके बारे में अवेयर हो गई है। सो these are the population growth and mainly if we summarize it, what is the population growth? Population growth is the change in the number of people living in the particular area between the 2 points of time। मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर समय के अंदर जो लोगों का नंबर ऑफ पीपल में जो चेंज होता है उसको ग्रोथ रेट होते हैं। ये 2 तरह से होता है, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। नेचुरल के अंदर जो नेचुरल बर्थ रेट्स होती है और जो इंड्यूस्ड के अंदर माइग्रेशन इनवर्ड आउट होता है उसकी वजह से होता है। थैंक यू।